Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line explanation for the grammar topic Varna Vichar, lesson number 2, class 7 from the book Vyakran Anand. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. वर्ण विचार, अपनी बात कहने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं. टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स वी टेक द हेल्प ऑफ वर्ड्स. सहाराना हेल्प, यारोட हेल्प எடுக்கிறோம், वर्ड्सோட हेल्प எடுக்கிறோம். शब्दों का निर्माण कई ध्वनियों से मिलकर होता है. सो द वर्ड फॉर्मेशन हैपन्स व्हेन वी जॉइन डिफरेंट साउंड्स. आ, ई, उ, देयर आर डिफरेंट साउंड्स, राइट? அந்த साउंड्स எல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணாதான் ஒரு வேர்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும். हम मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं. सो फ्रॉम द माउथ वी मेक मेनी डिफरेंट साउंड्स. भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द लैंग्वेज इज द साउंड. व्याकरण की भाषा में ये ध्वनि वर्ण कहलाती है. एंड इन द ग्रामर एस्पेक्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट द साउंड वी से एज वर्ण. वर्ण ना द लेटर. वर्णों का मेल ही भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप का आधार है. सो द जॉइनिंग ऑफ द लेटर्स ओनली इज द बेस फॉर द ओरल कम्युनिकेशन ऑफ द लैंग्वेज और द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द लैंग्वेज. भाषा को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह होता है. सो टू राइट द लैंग्वेज देयर इज अ डिटरमाइंड सिम्बल्स ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சவுண்ட். ஒரு சவுண்டுக்கும் ஒரு சிம்பிள் அசோசியேட் ஆகிருக்கும். அப்போ தான் அதை எழுத முடியும். ஓகேவா? सो वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते. सो वर्ण इज द साउंड to which we cannot divide further. So it's the smallest unit in the language which we cannot divide. அதுக்கப்புறம் அதனும் உடைக்க முடியாது, அதை டிவைட் பண்ண முடியாது. वर्णों के भेद, the classification, the types of varnas. वर्ण के दो भेद हैं, two types. One is स्वर, second one is व्यंजन. स्वर is vowel, व्यंजन is consonant. स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है. सो व्हेन यू प्रोनाउंसिंग द साउंड, उच्चारण ஒரு சவுண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது द ஏர் வில் கம் அவுட் வித்தவுட் எனி பிளாக். ஒரு பிளாக்கே இல்லாமல் காற்று வெளியே வரும் எப்போ நீங்கள் ஸ்வரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது. वे स्वर कहलाते हैं. सो दोज लेटर्स आर कॉल्ड अ स्वर विच व्हेन you are pronouncing स्वर letters the air will not get blocked inside the mouth. ये 11 होते हैं. there are 11 स्वर letters. स्वर इतने इरके 11. so स्वर माला आ ई उ री ए आई ओ आउ. ए एन படிக்க கூடாது. after this every letter should be read separately only. री, इस स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है. सो री लेटर इज यूज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज. हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए हैं, सो हिंदी लैंग्वेज में संस्कृतலேருந்து வந்திருக்க वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर टेकन फ्रॉम संस्कृत इन द हिंदी लैंग्वेज, उन्हीं तत्सम शब्दों से इसका प्रयोग होता है. सो दैट वर्ड्स आर यूज ऐसे तत्सम. तत्सम नाम है द वर्ड्स विच इज टेकन फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज. हिंदी में इसका उच्चारण री की तरफ होता है. सो இது எப்படி படிக்கணும்? ரீன்ற ப்ரொனவுன்சியேஷன் கொடுக்கணும். see some example. this is a direct letter is there in the word ritu, rishi, rin ஆதி. here the matra. so ரீ இப்படி இருக்குன்னா the matra is this c இருந்து மாத்ராவை யூஸ் பண்ணும். கிருப்பா. ஸோ க ஹலந்த் கூட ரீ சேர்ந்துருக்கனால தான் you are writing kru. this matra is coming here. கிருப்பா, மிருக், சிருஷ்டி, श्रृंगार आदि. ஸோ அங் இஸ் அனுஸ்வார். ஒரு லெட்டருக்கு மேலே ஒரு டாட் இருக்கும். திஸ் இஸ் அனுஸ்வார் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ வென் வி ஆர் ப்ரொனவுன்சிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் द साउंड विल कम फ्रॉम द नोस. इन्हें अनुस्वार कहते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज अनुस्वार. इसका स्वर की तरह स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता. लाइक वावल्स दिस लेटर कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड फ्रीली. इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है. सो दिस इज यूज्ड अलॉन्ग विद द कंसोनेंट्स लाइक कंग, खंग, पंक. ஸோ ஒரு கன்சோனன்ட்க்கு மேலே தான் இந்த லெட்டரை ஜாயின் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அனுஸ்வாரை. ये ना तो पूरी तरह स्वर है और ना व्यंजन. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली वावल, नॉट कम्प्लीटली कंसोनेंट. अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होती है. सो द कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन कम्स फ्रॉम द नोस. नासिका ना नोस. ये व्यंजनों के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर आता है.
तब इसका रूप होता है. So this is the representation. So this letter is used at the last letter of the 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग. ஸோ அதில் இருக்க 5th லெட்டருக்கு பதிலாக இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். The half letter is represented by dot here. Okay, let's see one example and go. See, கங்கான்னு இருக்குது. ஸோ டாட்டுக்கு அப்புறம் என்ன லெட்டர் இருக்குது? கா. ஸோ கா சீரீஸ் எழுதுங்க. க க க க ஙா ஙா. ஸோ கங்கா, how you are pronouncing this? இந்த பஞ்சம அக்ஷர் தான், 5th letter of க வர்க். ஸோ திஸ் half letter தான் நம்ம இங்கே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம், கங்கா. See one more example, கண்டி. ஸோ டாட்டுக்கு அப்புறம் ட, ட வர்க் எழுதுங்க. ட ட ட ட ந, ட ட ட ட ந. ஸோ this half letter na is replaced here, ganti. Okay, so the 5th letter of that varg is used here. So this is anuswar. Aha, this is visarg. Aha is a visarg, इसे विसर्ग कहते हैं. So the ह sound pronounce आगो, இதுவும் संस्कृत वर्ड लदा यूज़ பண்ணுவாங்க. वास्तव में इसकी स्थिति भी स्वर तथा व्यंजन के बीच की है. So this is also in middle of स्वर and व्यंजन. स्वर की तरह इसका भी चिन्ह, இதுக்கு सिंबल வந்து இந்த 2 dots होता है, किंतु इसका उच्चारण व्यंजन के साथ ही होता है. इट कम्स अलॉन्ग विद द व्यंजन वनली, अलॉन्ग विद द कंसोनेंट्स கூட தான் வரும். லைக் अतः, त கூட வரும் ह साउंड, अतः. विसर्ग का उच्चारण व्यंजन ह के समान होता है. सो ह ஓட हाफ pronunciation எப்படி வருமோ அப்படி தான் இந்த 2 dots படிக்கணும். This is visarg. This will come along with the consonants only. So you can see some example, अतः, प्रातः, नमः. So see the examples, अतः, प्रातः, नमः, संभवतः आदि. इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों में किया जाता है. So mostly this kind of visarg symbol is used in the Sanskrit words only. Next is a. This is agadvani, where we will be using this to pronounce the abroad languages like English. इसे अगत स्वर कहते हैं. This is known to be agat. So you will not put chandrama bindi, अर्ध चंद्रमा. चंद्रमाना இது, half चंद्रमाना இது. This is for agadvaniக்கு நம்ம represent பண்ணுறோம். அந்த o sound கொண்டு வரது. College, ball, அந்த o soundக்கு this is used. This is agat स्वर. ये स्वर अंग्रेजी से आए शब्दों में ही आता है. So this letter you can see only in the words that comes from English language. इसका चिन्ह इदा ओके होता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, ऑफिस आदि. रीड अबाउट मात्राएं. स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में भी होता है तथा ये व्यंजनों के साथ मिलकर भी बोले जाते हैं. द स्वर लेटर आ is independently pronounced like the letter, or it will combine with the व्यंजन consonants को join आई मात्रावा वरुण. आ, ई मात्रावा, आक मात्रावा. So it's symbol आवो represent பண்ண முடியும் ஸ்வர். So either direct letter ஆவும் எழுதலாம், or you can write symbol. आक मात्रा இல்லை, आक symbol இருக்கு. Okay. So स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है. So स्वरों का उच्चारण, the pronunciation of the vowels is very independent, and when it can also add along with the consonants. So व्यंजन को add आइट we can read it. जब ये व्यंजन के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं तो इस प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है. So when it combines with the consonants, we'll use a special symbol for that स्वर letter. So இப்போ ई அப்படின்னா ई की मात्रा, this symbol. ऊ ना छोटी u की मात्रा, this symbol. So the letter swar can be said independently as a letters, or when it combines with the consonants, then you will represent them as a symbol. और स्वर साउंड के और सिंबल इருக்கு जो उसकी मात्रा कहलाती है. So it is said to be the मात्रा for that letter. आ ओட मात्रा என்னது? This one. U oda matra another this one. Each and every swar letter can be said independently, or it can be combined with the consonants. When it combined with the consonants, it takes the matra form, symbol form ले इर्तको. हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाती है. So each and every swar vowel which combines with the consonants and they form a matra.
ஸோ ஒரு லெட்டருக்கும் ஒரு கன்சோனன்ட் கூட சேரும்போது அது மாத்ரா ஃபார்மில் எடுத்துக்கும். see here for example, ஸ்வர் ஆக்கு மாத்ரா இல்லை, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, ரி, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ. So this is the symbol for the above swar letters. So this gets combined with each and every consonants. So स्वरों के प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं. So now the swar can be divided into 3 based upon the time which it takes to pronounce the letters. Hasra swar, dirgha swar, pulut swar. Hasra swar short vowels which takes very less time for the pronunciation. Hasra का अर्थ है लघु, tiny अथवा छोटा, small. जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, the letters which takes very less time for pronunciation, उन्हें hasra स्वर कहते हैं. So that comes into the category of hasra स्वर. ये कुल 4 हैं, it's only 4. a, i, u, ri. a, i, u, ri. இது pronunciation தான் less time ஆகுது. दीर्घ स्वर is long vowels. दीर्घ का अर्थ है बड़ा, the big one. जिन स्वरों के उच्चारण में अस्वर स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, compared to the hasra स्वर, to pronounce the दीर्घ स्वर will take a longer time. Most probably it will double the time. उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. So those letters we say as दीर्घ स्वर. ये कुल 7 हैं, it is 7 in number. आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ. पुलुत स्वर is a longer vowel which takes more time than the दीर्घ स्वर. इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும் இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम. ஸோ இது வந்து संस्कृत தான் வரும், லைக் ओम. यहाँ ओम पुलुत स्वर का चिन्ह, सिंबल फॉर पुलुत स्वर. नेक्स्ट इज व्यंजन, द कंसोनेंट्स. जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं. द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ स्वर vowel, they are called as consonants, व्यंजन. ஸோ எந்தெந்த லெட்டர்ஸ்லாம் ஸ்வரோட ஹெல்ப்போடு நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம व्यंजन சொல்லுவோம். ஸோ व्यंजन वर्णमाला you should know. So this order you should remember. You cannot write on your own order. This order only you have to follow. Then only it is called as वर्णमाला. So क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग. अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व. उष्म व्यंजन श, श, स, ह. संयुक्त व्यंजन, the combined consonants sh, tra, nya, shra. Two letters d and dh is used to stress the letter when you are reading the words from the other language like Arabic or Urdu. व्यंजन का ऊपर लिखा रूप स्वर सहित रूप है, अन्यथा इसे ख, ख, घ, घ, आ. The letters which is written above is with along with the swar. If you have to remove the swar sound, then the letters will be like this: k halant, ख हलंत, ग हलंत, ग हलंत, ङ हलंत. So this is how you have to represent if you are removing the स्वर sound from the व्यंजन. व्यंजनों का स्वर रहित रूप में हलंत लगाकर लिख सकते हैं. So स्वर रहित means without स्वर. So you have to put the halant. This halant symbol will come below the letter to represent it is a half letter, in the sense the स्वर sound is not there. அது स्वर रहिता इरुक्कु. परंतु उच्चारण के समय इसका स्वर सहित रूप अर्थात क हलंत प्लस अ ही प्रयोग किया जाता है. वी आर ट्राइंग टू प्रोनाउंस वी सेस क हलंत. ओके, सो क हलंत प्लस अ இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். व्यंजनों का उच्चारण अ स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता. विदाउट द हेल्प ऑफ द लेटर अ वी कैन नॉट प्रोनाउंस एनी व्यंजन. सो எல்லா व्यंजनமும் क हलंत प्लस अ, च हलंत प्लस अ, र हलंत प्लस अ. ஸோ எப்போவுமே அந்த ஹாஃப் லெட்டர் கூட அ இருந்தால் தான் பேஸ் व्यंजन ர, க இந்த பேஸ் லெட்டரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லா व्यंजनலையும் அட்லீஸ்ட் அ சவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. None of the व्यंजन can be pronounced without a sound. So basically for the pronunciation of all the व्यंजन्स, for all the consonants letter, you should use at least the स्वर sound a. वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहता है. So that is वर्णमाला. So the organized way, in the order in which the letters are arranged, the organized way in which the letters are arranged, we say as varnamala. Letters are mati edna, that is not varnamala. The order in which it is given here, this is varnamala. நீங்கள் இந்த வர்க்க இங்கே இதை எடுத்து இங்கெல்லாம் எழுத முடியாது. You have to follow the same order.
then only we'll say this as a varnamala. So dhyan de, you have to note here there is a 2 letters d, dh. So d और ढ वर्ण में कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता. No word will be starting from these 2 letters. ड और ड का प्रयोग या तो शब्द के बीच में होता है, इट विल बी इन द मिडिल ऑफ द वर्ड और एट द एंड ऑफ द वर्ड, या अंत में होता है, जैसे सड़क, पढ़ाई, पेड़. स्वर रहित व्यंजन लिखने के तरीके. सो हाउ यू कैन राइट द स्वर रहित विदाउट स्वर साउंड, हाउ यू हैव टू राइट. सो डिफरेंट वेज यू कैन राइट द कंसोनेंट्स विच डजंट हैव स्वर साउंड. यदि व्यंजन को स्वर रहित लिखना है तो उसके निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है. यू कैन फॉलो टू राइट द व्यंजन्स विच डजंट हैव स्वर साउंड इन द गिवन बिलो फॉर्म्स. पाई हटाकर, बाय रिमूविंग द लाइन, पाई ना द स्टैंडिंग लाइन रिमूव பண்ணிட்டு you can write the consonants which is स्वर रहित, साउंड इल्लाद, स्वर साउंड इल्लामा हाफ लेटर्स है, you can remove this. अर्थात यदि पाई है तो उसे बिना पाई के लिख कर, जैसे सो इफ द स्टैंडिंग लाइन इज देयर, से फॉर एग्जाम्पल ख, घ, म, न, these letters and all we have standing line. So first option to write the half letter where the swear is removed and சொல்றதுக்கு you have to remove this line to make it as a half letter. So kha, ma, na, ga, cha. Like this you can remove this line, standing line, make it as a half letter. हलंत लगाकर, by keeping the हलंत, अर्थात अक्षर ढ, ढ, ठ, ह आदि के नीचे हलंत लगाकर, जैसे सो इफ दे से राउंडर लेटर्स राइट, ड, ड, ट, ट, இதெல்லாம் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும். இப்போ கடிப்பாயில் நம்ம டிவைட் பண்ணி இப்படி எழுதுகிறோம். இப்போ இது மாதிரி டிவைட் பண்ண முடியுமா? இட் கேன் நாட் பி டிவைடட். ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் வி ஹேவ் டு புட் த ஹலண்ட் டு மேக் த ரீடர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் த ஹாஃப் லெட்டர், இட் டசன்ட் ஹேவ் ஸ்வர் சவுண்ட். ஸோ இது கீழே ஹலண்ட் போட்டு வி ஆர் மேக்கிங் த ரீடர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் த ஹாஃப் லெட்டர். ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரவுண்டர் வேர்ட்ஸ் வி வில் ரைட் லைக் திஸ் இட் செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் இஸ் குண்டி ஹட்டாக்கர், த கர்வை எடுத்துட்டு, அர்த்தாத் லைக் சி ஃபார் க அண்ட் ஃப, திஸ் இஸ் த ஃபுல் லெட்டர். டு ரெப்ரசன்ட் we'll be writing like this. This will be removed. So this will be removed and this is a half letter. Arthat ka and fa आदि की कुंडी हटाकर. So there are 3 ways we can write the half letter where svar sound is not there. By removing the line we are making a half letter. By putting the halant like this or the halant we are making this half letter. By removing the kundi, this curve remove பண்ணிட்டு we are making it as half letter. So these are 3 ways where you can make it as a half letter. So this is 3 ways you can use to represent the half letter where svar sound is not there. आई हटाकर, हलंत लगाकर, कुंडी हटाकर. व्यंजनों के प्रकार, the different types of व्यंजन. उच्चारण की दृष्टि से based upon the pronunciation व्यंजन 4 प्रकार के हैं. There are 4 types. स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन. The स्पर्श व्यंजन is what we are reading from ख, ख, ग, ग, ङ, च, छ, ज, ज, न, ठ, ठ, ड, ड, न, थ, थ, द, द, न, प, फ, भ, ब, म. First 5 lines we say as स्पर्श व्यंजन. This is स्पर्श व्यंजन. So स्पर्श व्यंजनों में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है. So when you are pronouncing these letters, स्पर्श व्यंजन pronounce பண்ணும்போது the tongue touches the different parts of our mouth. इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं. सिंस इट टचिंग, स्पर्श ना टच, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं. सो क वर्गलेंद प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है. सो क वर्गलेंद प वर्ग वரைக்கும் स्पर्श व्यंजन. सो यू शुड नो ख, ख, ग, ग, ङ, च, छ, ज, ज, न, ठ, ठ, ड, ड, न, थ, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म. So this is स्पर्श व्यंजन where the pronounce பண்ணும்போது the tongue is touching different parts of the mouth. नेक्स्ट इज अंतस्थ व्यंजन, सेमी कंसोनेंट्स स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं. सो दिस इज द लेटर विच इज इन बिटवीन द स्वर एंड व्यंजन, सो विच से अंतस्थ व्यंजन. अर्थात इनका उच्चारण में जिह्वा किसी विशेष भाग को नहीं छूती. एनी स्पेशल प्लेस तोड़ो ना तोड़ा दी, इट विल नॉट टच एनी स्पेशल प्लेस इन आवर माउथ. हेंस इट इज अंतस्थ व्यंजन, यर लवर. नेक्स्ट इज उष्म व्यंजन. इसके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है. सो व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग दिस लेटर्स द ब्रीथ विल कम आउट वेरी फास्ट. यू कैन सी ए हॉट एयर ऑल्सो. और ऊष्मा पैदा होती है. सो हेंस इट इज coming out very fast. It has some temperature. அது கூட ஒரு சூடுத்தன்மை இருக்கும். ஷ ஷ ச ஹ. ஸோ ஷ ஷ ச ஹ.
This is Ushma Vyanjan. Next is Sanyukt Vyanjan, the combined consonants where the two letters will be joined to form these letters. So you should remember this, you should by heart this. No other shortcut. Sh, Tra, Nya, Shra. So K halant plus Sh. Tra Ta halant plus Ra. Nya J halant plus Nya. Shra Sh halant plus Ra. So the first letter is half letter here. The next is a full consonants. So this you have to remember. See, Sh, Ka, Sh, Tra, Ta, R, Nya, J, Nya, Sh, R. The pronunciation will come if you pronouncing these letters correctly. Sh, Tra, Nya, Shra, Sanyukta Vyanjan hai. Anunasik tata Anuswar, semi-nasal and nasal. So Anuswar ka chin. So Anuswar is this. Anunasik is Chandrama Bindi. Anuswar is pronounced from nose. This is pronounced from both nose and mouth. To know the different symbols for Anuswar and Anunasik. Anunasik swar hai parantu Anuswar Vyanjan hai. So Anunasik is swar, Anuswar is Vyanjan. क्योंकि स्वरों की भांति अनुस्वार का भी चिन्ह होता है, अतः इसकी स्थिति स्वर तथा व्यंजन के मध्य को ही जाती है. सो कंपेयर टू द स्वर वावल्स, अनुस्वार का भी चिन्ह होता है. देयर इज अ सिंबल फॉर दैट, हेंस इट इज बिटवीन द स्वर एंड व्यंजन. अनुनासिक में बोलते समय मुख तथा नासिका दोनों के श्वास निकलता है. सो यू गेट द ब्रीथ फ्रॉम बोथ नोज एंड द माउथ. अनुस्वार ओनली नोज, अनुनासिक फ्रॉम बोथ नोज एंड द माउथ यू कैन गेट द ब्रीथ. तथा इसका प्रयोग इस प्रकार होता है. चांद, उंगली, ऊंट. सो अनुस्वार वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है. सो फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्णमाला. सो ङ, ञ, न, न, म. So in the letter or half letter that we will be representing in anuswar as a dot, like khanga, khanga के स्थान पे khanga. So instead of this we are putting dot. So this is actually kh, kh, g, g, nga. So in this either half letter के बदला we are representing as an anuswar as nga. Okay, like chanchal. So you have to always see the letter dot coupler के next letter and the series another ch, ch, jh, jh, nya. It has to be replaced by the half letter. So this is how you have to read chanchal. So this pronunciation only you have to read for the dot. Thand, andar, khamba. This is small pronunciation, khamba. अनुस्वार का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता अपितु स्वरों की सहायता में से ही होता है. सो अनुस्वार कैन नॉट बी प्रोनाउंस इंडिपेंडेंटली, विद द हेल्प ऑफ स्वर ओनली वी कैन प्रोनाउंस द अनुस्वार. शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा इनके अशुद्ध प्रयोग से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है. सो इफ यू चेंज द अनुनासिक अनुस्वार देन द मीनिंग विल चेंज. सी फॉर हंस इज ए बर्ड, swan. Hus is laugh, is an action word. So if you change the anuswar anunasik, the word meaning will also change. So when you are reading the anuswar anunasik, you have to follow it correctly. You should observe whether it's a anuswar or anunasik. Okay, we've been groups for different types of ra that is used in the Hindi language. If you want to get more details about this topic, you can go and check my grammar playlist. You will get more details about different types of ra. Now let me explain what is given in this book. विद्यार्थी अधिकतर र के प्रयोग में अशुद्धियाँ करते हैं. सो दैट स्टूडेंट्स विल बी मेक मच मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग द र के प्रयोग में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं. सो द बिलो थिंग्स यू शुड कॉन्सेंट्रेट व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ र. सो लेट्स गिव ए क्विक recap, then we'll read what is given here. So ra, the normal ra, and the full ra, the other one is used in the padin, other full ra used in the padin in this way, and this is half letter ra that is used in the ref. So the reading sequence la ra ku ram, rath abbe padikkanum. In the ra vandu the ra is there in front of with any half letter consonant is there which has a line. Kadipai irukra line irukra half letter consonant is there. To support this, the ra will sit in a slake, like see ka halant plus ra na ka kuda ra ipdi poi ukandukum. Okay, so kadipai irukra letters kella the ra will sit like this. When there is now kadipai illa, the rounder letters are there like th, th, d, d, and
idukku next this are whole half letter and next is r. Then to support this the r will come and sit like this V formation la sit aidum. Okay, so this is first normal r, this is Paden r for Kadipai, this is also Paden r for the rounded letters Golakar Varnaka, and the last one is half letter r. So in Hindi language we will not represent half letter r like this. அதுக்கு பதில் we'll put as in the ref மேலே லைனுக்கு மேலே ரேஃபாக போடும் எப்போ in the next coming letter. So if it is like this the reading sequence is ka adhar ma karam. So you have to read the ref-ல இருக்க r படிச்சுட்டு கீழே இருக்க letter படிக்கணும். If it is like varsha then this should come in the matra, it should not come in the letterல வரக்கூடாது, this is wrong. So always the half letter r will come in the matra இல்லைனா the letteroட last lineல வரணும். You cannot write like this also, this is wrong. Only at the last line of the letter you should add the r, or in the matra இப்படி v அப்படின்னா like this you can put matraல you have to put the r. So reading sequence you have to read the r and then v, read the r and then ma. Okay, having said this we'll see what is given here. यदि र अपने स्वर सहित रूप में है, सो स्वर सहित ना विच इज हैविंग द फुल लेटर स्वर साउंडोड इरुक्कु, तथा इसके पहले एंड बिफोर दिस का व्यंजन आधा स्वर रहित, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லெட்டர் தான் हाफ लेटर कंसोनेंटा இருக்கு. तो ये उसके नीचे इस तरफ लगता है. ஸோ அது இந்த லெட்டருக்கு கீழே லைக் க ஹலந்த் ப்ளஸ் र வந்து இந்த லெட்டருக்கு கீழே இப்படி வந்து உட்காந்துக்கும் பதேனில் के लगता है जैसे प्रेम, प्रकाश, राष्ट्र आदि. प्रेम शब्द में आया प्र. सो इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल प्रेम, दिस इज प हलंत प्लस र. एक ही मात्रा इज फॉर र ओनली, नॉट फॉर प म. So the matra everything will go for r only, the letter is always half letter. जैसे प्रेम, प्रकाश, राष्ट्र, प्रेम शब्द में आया प्र का मिश्रित रूप है, इसी प्रकार राष्ट्र का आया ट्र का मिश्रित रूप है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ ट एंड र. सो यहाँ ट में एक हलंत है तथा इसमें र के इस रूप में जुड़ा है. सो सी हियर राष्ट्र ल. सो हियर सी ट इज अ राउंडेड लेटर एंड इज अ हाफ लेटर एंड देयर इज अ र हियर, then it will come and sit here like this. So reading sequence la ra, sh, ada ta, then ra. This is should be the reading sequence. Rashtra, rashtra. Reading sequence is ra, sh, ta, ra. Rashtra. The matra will go for ra only. The consonant remains half letter. यदि र स्वर रहित है तो जहाँ भी आएगा अर्थात यहाँ भी इसका उच्चारण किया जाएगा उसके अगले वर्ण के शीर्ष पर इस तरह. सो इफ र इज हाफ देन वेर एवर इट कम्स इट विल बी कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट लेटर. जैसे धर्म, ध र म. सो रीडिंग सीक्वेंस द आधा र म. सो इट विल कम इन द हेड ऑफ द नेक्स्ट लेटर. But reading sequence you have to read the r and then read the letter below. The matra irunchna the r half letter r should be written on the matra के साथ. So when the sh it comes along with sh also. So sh kuda r varumbodhu it forms shra. Okay, shravan, shramik इस रूप में होता है जैसे श्रम, श्रीमान, श्रमिक, श्रद्धा आदि. Now स के साथ when it comes along with स kuda हलंत कुड़ा र वर्म स्र लाइक दिस. स इसका प्रयोग होता है स हलंत प्लस र स्र. यहाँ पे स्र है स हाफ लेटर देन र विल कम हियर. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज रिटन representation. स्रोत्र, सो र शुड बी प्रोनाउंस लेटर. सहस्र, स्रोत, सो हाफ रो त. ओके, स्रोत. नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन सूत्र. सूत्र को त हलंत प्लस र is there. So स्त्र. Okay, so स हलंत प्लस त्र is त्र. वस्त्र, शास्त्र. Understood? So त्र is त हलंत प्लस र. So वस्त्र it is व आधा स प्लस त हलंत प्लस र. This is how you have to वस्त्र. संयुक्त व्यंजन का व्यंजन गुच्छ. So the combined consonants order cluster of words. जब दो या दो से अधिक व्यंजन का परस्पर संयोग होता है when two or more than two consonants combine together,
सो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं. से कंबाइंड कंसोनेंट्स या व्यंजन गुच्छ, द बंच ऑफ कंसोनेंट्स कहते हैं. संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित है. श क पक्षी, क्षमा, अक्षर. न्याक ज हलंत प्लस न्या, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी. त्रक त हलंत प्लस र, नेत्र, क्षत्रिय, मित्र. श्र श हलंत प्लस र, श्रम, श्रवण, श्रमिक. So if your pronunciation is correct, then you can write easily. अन्य संयुक्त अक्षर युक्त शब्द. So other combined consonant words are प्रश्न, उत्तर, सज्जन. If you see, the same letters are repeating. Here if you see, the letters were not repeating. Here the letters are repeating. This is Dvitva Vyanjan, where the same letters are repeating, and where the letters are not repeating, it is said to be Sanyukt Vyanjan. So Dusahas, Uddesh. Here it is not repeating. Pattar, Prasidh, Udyan, Satya, Sandhya, Prashna, Swarg. So there are two types again. When the letters are repeating, letters are not repeating. So when the letters are not repeating, you say a Sanyukta Vyanjan. When the letters are repeating, same letters repeated, then it's a Dvitva Vyanjan. Varna Vichet. शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है. सो द वर्ड फॉर्मेशन हैपन्स बाय जॉइनिंग द लेटर्स. यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाए तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इज कॉल्ड एज वर्ण विच्छेद. सो सी हियर मानवता, मा न व ता. सो मा எப்படி எழுதணும்? म हलंत प्लस आ. देन न इज न हलंत प्लस अ. देयर इज नो मात्रा, so you have to put a. Work, there is no matra, so va halant plus a, and tak ta halant plus a. So if you are not putting the halant, then it will become wrong. So for each and every consonant that comes should have the halant. So halant pote are removing the swar sound. Saubhagya, saubhagya, sau ba, this is adha ga ya. So sauk sa halant plus auki matra. बाक ब हलंत प्लस आ. ग doesn't have any swer sound, just g हलंत. And yak y हलंत प्लस a. So this is sau ba g y, saubhagya. Next is swagat, swagat. So here sa is half, so no other swer sound. Va is v हलंत plus a. Then gat is g हलंत plus a. This is ga, not ga, okay, and ta is ta halant plus a. If you are not putting this halant in the consonants, then your answer will become wrong. So you have to observe properly. Next is mitrata, choti ki matra. So ma halant plus e, mi, tra. Now tra is ta halant plus ra. So now ta halant plus ra. Ra எப்படி எழுதணும்? ra halant plus a, right? Then ta halant plus a. So when you are splitting the combined consonants like sh, tra, nya, sh, you will get 3 letters. Every letters gets 2 only, right? When you are splitting the Sanyukta Vyanjan, then you will get 3 letters. Understood? So this you have to remember here. No, you cannot put tra halant like this. This is wrong. You have to split it. Okay. Next is Vistar. So V, va halant plus choti ki matra. Sa is half letter, so write half letter as it without any swer sound. And tak ta halant plus a, and rak ra halant plus a. So V adasa ta ra, Vistar. So वर्णों का उच्चारण, how you can pronounce the letters. वर्णों का सही उच्चारण अत्यंत आवश्यक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस द लेटर्स वेरी केयरफुली एंड करेक्टली. अन्यथा शब्द का अर्थ बदल जाता है. अदरवाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इटसेल्फ चेंजेस इफ यू चेंज द प्रोनाउंसिएशन. उच्चारण संबंधी कुछ विशेष बातें इस प्रकार है. सो द बेस्ड अपॉन द प्रोनाउंसिएशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बिलो थिंग्स. उर्दू से आए शब्द ज फ के नीचे बिंदु लगता है, वी कॉल एस नुक्ता. सो ज और फ के डॉट रखो, विच कम्स फ्रॉम उर्दू लैंग्वेज. So you have to read as a buzzing sound. Zameen, office. So and the nukta ku and the is sound kudukano. जैसे सजा, जोर. फ का उच्चारण फ के बिन होना चाहिए. So इधर the फ, इधर फ, इधर ज, इधर z. Okay. So the buzzing sound should be there.
सो व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग फ को बोलते समय दोनों होंठ छूते हैं और फ को बोलते समय नहीं. सो व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग द लेटर फ you can see the lips will join. When you're pronouncing f, the lips will not join. इसी प्रकार अंग्रेज़ी के कुछ शब्द हैं जैसे fail, fool आदि में ये बिंदु नुक्ता लगता है. So in English words also we put this dot. This is the अगत ध्वनि which comes for the words that is taken from विदेशी language, from the abroad languages. So fool शब्द में यदि fool कहा जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है. So fool அப்படின்னா flower. இப்போ ஃபூல்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது வித் பஸ்ஸிங் சவுண்ட் சொல்லும்போது இட்ஸ் எ ஃபூல். ஸோ த மீனிங் சேஞ்சஸ் ஃப்ளவர்லேருந்து ஃபூல் ஆகிடுச்சு இல்லையா. ஸோ யூ हैव टू रीड केयरफुली. फूल हिंदी का अर्थ है सही हिंदी वर्ड से पुष्प और सुमन. इसके फ को फ कहकर उच्चारित किया जाएगा तो वह अंग्रेज़ी का शब्द फूल हो जाएगा. सो इफ़ यू आर रिप्लेसिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ विथ फ देन इट विल बिकम फूल विच इज़ द इंग्लिश वर्ड. दिस मीन्स मूर्ख, इडियटன்னு சொல்கிறோம் ना. अशुद्ध उच्चारण से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं. सो इफ़ यू आर प्रोनाउंसिंग रॉन्गली द मीनिंग ऑल्सो चेंजेस. कुछ हिंदी शब्द में श के स्थान पर स. सो इफ़ यू सी इन सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग श एंड स दे विल बी यूजिंग सा ओनली का प्रयोग किया जाता है. लाइक सुषमा पर सुषमा, शीश पर सीस उच्चारण किया जाता है. सो दिस ऑल आर रॉन्ग टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन. श एंड श पर स சொல்லக்கூடாது. So sh, sh, s का स्पष्ट उच्चारण आवश्यक है. So you have to clearly pronounce the letter sh, sh, s. अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में ध्यान न रखा तो हंस क्रिया शब्द हस पक्षी बन जाए. So if you are replacing the अनुस्वार and अनुनासिक, you are not reading properly. Then for example, hus is an action word, laugh. Hans is a bird. So this will change. And the pronunciation, this will come from both mouth and the nose. This will come only from the nose. So all these things you have to keep in mind. Ch or sh. See, ch is the consonant. Sh is a combined consonant. So you have to pronounce these letters correctly. So this is plus a, this also plus a. Like this you can write. So ch और sh के उच्चारण में अंतर रखना चाहिए. क्षमा, परीक्षा, शिक्षा आदि को क्षमा, परीक्षा, चिच्चा नहीं बोलना चाहिए. सो चान படிக்க கூடாது, ஷன் தான் படிக்கணும். क्र और क्र. सी क्र एस क हलंत கூட र, क्र एस क हलंत கூட री. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड श्र एंड श्र. सी श्रல வந்து ஷ हलंत प्लस र इस श्र. एंड श्रीல வந்து this sh halant kuda re is added. The r is removed and re is added. So these things you have to remember. When you are reading the letter, you should remember how the letter is formed. क्र में र तथा क्र में री. इस प्रकार श्र में श्र हलंत, श्री में श्र हलंत प्लस री. So these things you have to remember. Okay. शिरु रेखा. शिरु रेखा is a line which we put. शिरु रेखा का उपयुक्त प्रयोग आवश्यक है. So you have to write the line for the words correctly, otherwise the meaning will change. See jalsa. Jalsa na is a utsav, the festival or the function. So na jalsa பண்றேன் அப்படினு சொல்லுது. Jalsa. So if you are putting the line differently like water I don't. And also shiru rekha க்கு மேல தான் the matra will be there. Okay. So இது மாதிரி எழுதக்கூடாது. So that's why we are using nehi, makலாம் இப்படி எழுதுறோம். This also you should understand. ஸோ எல்லா டைமும் ஷிரு ரேகாவுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா we cannot write like this. மாத்திரா பக்கத்தில் ஷிரு ரேகாவில் மாத்திரா பக்கத்தில் we cannot write like this. So we are replacing with dot. This also you have to remember. So மே படிக்கும் போது மேன் படிக்கிறோம், அந்த இந்த சவுண்டை தான் படிக்கணும். நெஹி. இப்போ மாத்திரா வந்து ஷிரு ரேகாக்கு உள்ளே இருக்குது. ஸோ திஸ் ஆங்க் யூ கேன் ரைட். ஆனால் இங்கே மாத்திரா ஷிரு ரேகாக்கு மேலே இருந்ததுன்னா யூ கேனாட் ரெப்ரசென்ட் லைக் திஸ். யூ ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ் வித் டாட் ஒன்லி. बट प्रोनाउंसिएशन विल और अनुनासिक ओनली बोथ नोज एंड माउथ. याद रखने बातें. सो व्हाट वी हैव लर्नड नाउ. भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके कंठ नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं. स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज लेटर. वर्ण, स्वर तथा व्यंजन इसके दो भेद हैं. सो 2 टाइप्स ऑफ स्वर एंड व्यंजन. जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप में है स्वर कहते हैं. सो द लेटर स्वर वावल्स कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर. There are 3 types: hasv, dirgh and flut.
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्वर, वी से एज व्यंजन, से कंसोनेंट्स, स्पर्श, अतस्थ, ऊष्म एंड संयुक्त. देन वर्णों के समूह को वर्णमाला, द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज वर्णमाला विच इज इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म रखना. व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे मात्रा. सो अलॉन्ग विद द consonants, when the swer is also added, then we represent it as a symbol which is known as मात्रा. एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते तो ये वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं. So when one or two letters are joined together or told, we say संयुक्ताक्षर, combined consonants, combined words. शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद. So splitting of these letters from the word we say as वर्ण विच्छेद. So hope you have understood the basic topic of Varna Vichar. You should know how these letters are pronounced and how you have to use it, what is the right form of using and what is the wrong way of pronouncing. So if you read this lesson properly, you should not get any pronunciation mistake. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section, surely reply back. In the next video, we'll see the book back exercise. Thank you, students.